নমস্কাৰ মই উৎপল ইমান দিনে এই কথাটোৰ চৰ্চা হৈ আছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জুট চৰকাৰ চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা নাই গতিকে এই চৰকাৰখন কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখলৈ অহা আন এটা সমস্যা হ'ল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া কেনেদৰে সামঞ্জস্য ৰাখি চলিব আৰএছএছৰ সৈতে কাৰণ চেক বুজি এতিয়া আৰএছএছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখুৱাইছে ৰঙা চকু যি ৰঙা চকু যোৱা 10 বছৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠ চৰকাৰ চলোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰএছএছ কিন্তু যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ মিত্ৰ দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিল তাৰ পাছতে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে কৰা মন্তব্য হৈ পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে কটা ঘাট চেঙাতেল দিয়াৰ দৰে মোহন ভাগৱতৰ মন্তব্য নিৰ্বাচন শেষ হৈছে এতিয়া ৰাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পাহৰি দেশ গঠনত সকলোৱে মনোযোগ দিয়া উচিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মানে যুদ্ধ নহয় বিৰোধী শিবিৰকো সমানেই গুৰুত্ব দিয়ক চৰকাৰে নতুন চৰকাৰলৈ এয়া প্ৰথমটো বাৰ্তা আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ নাগপুৰত সংঘৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকৰ পৰা মোহন ভাগৱতৰ আৰু স্পষ্ট বাৰ্তা যে নিৰ্বাচন হ'ল ঐক্যমত গঢ়ি তোলাৰ এটি প্ৰক্ৰিয়া সংসদত দুটা পক্ষ থাকে এটা শাসক আৰু আনটো প্ৰতিপক্ষ তাত যিকোনো প্ৰশ্নৰ উভয় দিশ বিবেচনা কৰিব লগা হয় যাতে আমি সঠিক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰো সংসদত শাসকৰ বিপৰীতে থকা পক্ষটোক আমি বিৰোধী পক্ষ বুলি নকওঁ আমি কওঁ প্ৰতিপক্ষ গতিকে প্ৰতিপক্ষ বিৰোধী নহয় তেওঁলোকক বিৰোধী বুলি গণ্য কৰা উচিত নহয় বিগত কেইবা বছৰ ধৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজনৈতিক প্ৰতিহিংসাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ তদন্তকাৰী সংস্থাৰ ধাৰাবাহিক ব্যৱহাৰ সংসদৰ পৰা শতাধিক সাংসদক নিলম্বনেৰে বিৰোধী দমনৰ অভিলেখ ৰচনা কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন চৰকাৰলৈ আৰএছএছ প্ৰধানৰ এই বাৰ্তা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আমি দেখিছিলো কেনেদৰে বিৰোধীৰ মূল নেতা ৰাহুল গান্ধীক নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ লঘু অভিযোগত গুৰুতৰ শাস্তিৰে কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ধাৰাবাহিকভাৱে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হৰফ হোৱা তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰক সংসদৰ পৰা স্থায়ীভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছিল ইত্যাদি ইত্যাদি যোৱা সময়খিনিত আমি এই কথাও দেখিছিলো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত কেৱল মই আনকি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বা দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতিকো তেওঁ মোদী গেৰাণ্টি বুলি নিজৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল তেনে প্ৰেক্ষাপটতে নতুন চৰকাৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি ভাগৱতে কয় যে এজন প্ৰকৃত সেৱক তেওঁৱে হয় যিয়ে কোনো অহংকাৰ নকৰাকৈ কাম কৰে আৰু তেতিয়াই তেওঁ নিজকে সেৱক বুলি কোৱাৰ অধিকাৰী হয় যোৱা 10 বছৰীয়া শাসনকালত ক্ৰমাৎ একনায়কত্ববাদী শাসকলৈ পৰ্যবসিত হোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰলৈ মোহন ভাগৱতৰ স্পষ্ট বাৰ্তা সংসদত বিভিন্ন বিষয়ত ঐক্যমত গঢ়ি তোলাত লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আমাৰ পৰম্পৰা হৈছে ঐক্যমতৰ বিকাশ নিৰ্বাচন কেৱল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাহে যুদ্ধ নহয় বুলি মন্তব্য মোহন ভাগৱতৰ চৰকাৰ গঠনৰ পাছতে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক উদ্দেশ্যি মোহন ভাগৱতৰ এই বাৰ্তা অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ধাৰাবাহিকভাৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক প্ৰতিহিংসাৰ অভিযোগ তুলি আহিছিল বিৰোধীৰ অভিযোগ আছিল সিবিআই ইডি আয়কৰ বিভাগ আদিৰ দৰে এটাৰ পাছত আনটো কেন্দ্ৰীয় সংস্থাক কুক্ষিগত কৰি নিজৰ স্বাৰ্থত এইসমূহক বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফ্ৰিজ কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ বেংক একাউণ্ট কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে বিৰোধী শিবিৰৰ কেইবাগৰাকীও নেতাক কেৱল হেয়াই নহয় সংসদৰ ভিতৰতো সংখ্যাৰ বল দেখুৱাই বিৰোধীৰ কোনো কথা শুনিবলৈ নাৰাজ শাসক পক্ষ এনে পৰিস্থিতিত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ সময়তে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ এই বাৰ্তাই এই কথাই সূচায় যে নতুন চৰকাৰে অতীতৰ দম্ভ আৰু একনায়কত্ববাদী মানসিকতা পাহৰি গণতন্ত্ৰৰ মূল্যবোধক যাতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं इसलिए स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है होना ही चाहिए परंतु उसमें भी एक मर्यादा है असत्य का उपयोग नहीं करना चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे बैठकर अपने देश को चलाएंगे सहमति बनाकर चलाएंगे हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सहचित्तमेषाम इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है सब जगह उन्होंने सम कहा है समानो मंत्र समिति समानी समानम मना लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है।
वास्तव में संसद क्यों है, उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए की। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर, जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है।